friends, welcome to our YouTube channel Banana Academy. Moodle tutorial series के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि what are the different categories of questions. Okay, so to start with, in this video we are going to discuss about two basic categories of questions. First two categories, which are multiple choice questions, and second true false type of questions, okay, wherein a statement is given, and whoever is attempting that question, they have to select either true or false as the answer. Okay, so शुरू करते हैं. First I will click on turn editing on, and then I will just create a quiz. Okay, so I will click on add an activity or resource, and from this dialog box I will select quiz. Now I can create the name of the quiz, dummy quiz. Okay, the instructions, I'm just repeating whatever I have discussed in my previous videos. Okay, the timing and all can be set. Okay, and then just I will save and return to the course. I'm just creating the quiz, and then we will discuss, okay, what is that quiz, means what is the uh, extent to which those quiz settings can be uh, done. Okay, so first we will talk about how to add the questions in the quiz, and definitely we are going to discuss about two different categories over here. Okay, now I will just click on edit quiz, and आप यहाँ देख सकते हैं from here I can add a question. Okay, so when I click on add a new question, so different options are given. So first we are going to discuss about multiple choice. Okay, now जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो वहां पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. एक तो फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिसमें हम ओनली वन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट आर गिवन. Another is where you can select multiple options. Okay, so we will see both the categories, subcategories in the case of your multiple choice questions. Okay, now I will just click on add. जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड क्लिक किया है, आप यहाँ देख सकते हैं मुझे क्वेश्चन की सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है Moodle के द्वारा. इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अब अपने क्वेश्चंस को एंटर कर सकता हूँ. Okay, so question name I can write as question 1. Okay, then I can say what is the uh, I can write a question, which one of the following is the capital of India. Okay, this is the question. Okay, now you can set default mark over here. I am selecting 1. Similarly, if you want to give a general feedback to the means custom feedback, if you want to set, because already Moodle पे जब students attempt करते हैं quiz को, तो general feedback means Moodle's feedback is already available. Now, if you want to give some general feedback to the quiz to the students about this question when they attempt it, then you can set it over here. Okay. Similarly, herein you have to select between two subcategories that I already discussed. One is one answer only question, second is multiple answers allowed. Okay, we will first see how you can create a one answer only type of question. Okay, so we will select over here. If you want to shuffle the choices, it's fine. Now, you see, you have different choices. Okay, like means what, how your choices will look like ABC, capital ABC, 1 2 3, Roman numerals of 1 2 3. Okay, and if you want no numbering, only the options to be shown, then you can do that. So we will first see this ABC. Okay, we will just select it, and
then we will write the answers. So answers are written as part of your choice 1, choice 2. So I will just write as New Delhi. Okay. Now, if this is the correct answer, then what is the mark that will be given to that student if he selects this answer? तो वो यहाँ पे ग्रेड में आपको सेट करना होता है. ओके. तो अगर न्यू दिल्ली करेक्ट है, जो कि करेक्ट है हमारे केस में, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, सो आई विल सेलेक्ट 100%. 100% मीन्स उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, है ना, टोटल मार्क उसको असाइन हो जाएंगे. ओके. Now one more thing you can do is you can also, for each and every option also you can give the feedback, है ना, like you can say ये this is the correct answer. ठीक है. तो ये क्या है, स्टूडेंट को जब वो सेलेक्ट करेगा तो उसके बाद उसको जो है ये फीडबैक मिलेगा. ओके. यू कैन ऑल्सो राइट चॉइस नंबर 2 कोलकाता, चॉइस नंबर 3 मुंबई and choice number 4 Chennai. Now we must understand, so you can increase the choices also, huh? So you can add more choices from here. So how many, it's not necessary, means it is not the case कि Moodle आपको restrict करता है number of choices के लिए. Okay. So I am giving here 4 choices. Okay. Now one thing that you should understand is कि अभी मैंने क्या किया है कि जो आंसर करेक्ट है उसको 100% ग्रेड असाइन कर दिया है, और बाकी में आप देख सकते हैं मैंने नन रखा है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं रख रहा हूँ. ओके. सो इफ यू आर आंसरिंग द करेक्ट वन, देन वहां पे क्या होगा, आपको करेक्ट फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इस केस में 1 मार्क. एंड इफ you have selected the wrong answer, then in that case you will be allotted 0. अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेगेटिव मार्किंग रखूं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी रॉन्ग आंसर है वहां पे नन की जगह पे मैं वहां पे उसको कितना परसेंटेज ऑफ नेगेटिव मार्किंग रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ. जैसे कि मैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यू सी, माइनस, so it's going towards your +1, and I can select like I want to deduct 25% of marks. Okay, so I can select like that. Okay. I can select, if somebody selects Mumbai, I want to uh, reduce 12.5% of marks. Then Chennai 20%. Now you may ask the question, sir 25% तो सबके लिए डिड्यूस होना चाहिए, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक अलग सिनेरियो बता रहा हूँ. कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, बट 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन क्लोज टू द आंसर होते हैं, कुछ करेक्ट, एक करेक्ट आंसर होता है एंड कुछ क्लोज टू द आंसर होता है, एंड कुछ बिल्कुल ही मीन्स वेयर इन यू विल नेवर गेट एनी मार्क. ओके. तो यहाँ पे जैसे कि हम जब साइकोलॉजी का पेपर देते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर देते हैं, ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आउट ऑफ 4 आंसर्स कुछ आंसर्स क्लोज टू द करेक्ट आंसर होता है, कुछ करेक्ट आंसर होता है. ओके. और कुछ एक एक आंसर ऐसा होता है जिसमें आपको कोई नंबर मिलना भी नहीं है. तो आप अगर हमेशा अगर आप देखेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड या साइकोलॉजी के पेपर में, एक ऑप्शन अगर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने पे आपको फुल, लेट अस सपोज इफ इट इज ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन, तो 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा. देन 3 2 0 इस तरीके से आपको दिया जाता है. ओके. सो that's what I wanted to tell you. Otherwise you can select 25% for all the wrong answers. Okay. तो ये भी आप यहाँ पे इस तरीके की सेटिंग्स कर सकते हैं. नाउ मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ. जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप उसकी सेटिंग्स को फिर से चेंज कर सकते हैं. ओके. इसके बाद क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस पे जाइए. ओके. आपने जो अभी क्वेश्चन क्रिएट किया है, अगर आपको उस क्वेश्चन का प्रीव्यू देखना है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव created. So I will just delete this question so that it will not be visible to me. So it is deleted. तो अभी मैं अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो मैं इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा. आप देख सकते हैं
यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इट इज शोन, है ना। और यहाँ हमने ए बी सी डी ऐसे हमने सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे मिल रहा है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज, if you do not want such kind of numerals or alphabets to come in front of your answer, you can just select no numbering. Okay, and just you can save the changes। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं हम लोग इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके आंसर्स यहाँ शोन है, बट इन योर आंसर्स ए बी सी डी और कैपिटल ए कैपिटल बी, है ना, सच काइंड ऑफ means alphabets or numerals are not in the front of the answer, and it is not needed also ना, because आपके पास जो है ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, हमने शफल किया है आंसर्स को, करेक्ट। तो जब हम शफल करते हैं अपने आंसर्स को, तो कई बार कैसा होता है कि अगर आपका ए न्यू दिल्ली असाइंड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शफल किया हुआ डी पे है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी सी डी ऐसे उल्टा आएगा, है ना, इन रिवर्स मैनर। और कभी क्या होगा, कोलकाता इज ए, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, सो इट डजंट लुक गुड, यू नो। सो इट्स बेटर कि आप, अगर इट्स अपॉन यू एक्चुअली, दीज ऑप्शंस आर अपॉन यू। अगर आप shuffling करना चाहते हैं, it's better you go with this option button without any numeral or any numbers। Okay, now हम लोग सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो वन आंसर ओनली है, इसकी जगह पे हम मल्टीपल आंसर्स अलाउड पे क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट। सो आई विल जस्ट select, let us suppose, Delhi and Kolkata as the right answer. Okay, and my others are wrong. So I will just give none to all other options। Okay, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, so it is showing me an error saying that the positive grades that you have chosen do not add up to 100%, instead they add up to 200%। what it means is कि मैंने जो है दोनों के आंसर्स को 100% दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो दोनों को 50-50% कर दो, या तो मैं क्या कर दूँ कि एक को नन कर दूँ। ठीक है, बिकॉज मेरा आंसर जो है टोटल ऐड होके कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ओके, अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ मेरा क्वेश्चन कैसे यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, मैं एनी नंबर ऑफ आंसर्स आई कैन सेलेक्ट, है ना, एंड देन व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट एंड फिनिश, it will give me an answer saying that, you see, this feedback for a question also is given to me, sorry, an option is also given in front of it. I have selected all, so correct answer is New Delhi, so it is saying that this is your correct answer, you got 1 mark out of 1, and for other wrong answers you have not given any marks। ठीक है, तो आपने करेक्ट किया था। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ सेटिंग द क्वेश्चन, आप यहाँ समझ सकते हैं। मैं सिंस मैंने सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट किए हैं, तो वहाँ पे क्या है, मुझे 0 मार्क मिलना चाहिए, मुझे केवल न्यू दिल्ली के लिए करेक्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया है, आप क्या कर सकते हैं कि आप जो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके आप उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मार्क सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हम एक नया another category I am trying to show you, that is true false kind of questions। ओके, सो यहाँ पे ट्रू फॉल्स पे सेलेक्ट करके जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो अगेन मुझे क्वेश्चन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम अलग तरीके से आंसर लिखते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। ओके, सो हियर आई कैन राइट इज लंडन द capital of United Kingdom। Okay, so यहाँ पे if you want to give certain details, okay, so I can give this question and I can write the question number over here। Okay, now default mark is fine, general feedback you want to give, fine, है ना, correct answer। Now here if you see that uh,
there are only two options given. Okay, यहाँ पे कोई choices नहीं होते हैं, nothing. So based on the question that you have asked, question में क्या पूछा है, is London the capital of यूनाइटेड किंगडम? ओके, सो इन दिस केस क्या होगा कि आप लंदन इज कैपिटल, करेक्ट, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रू सेट कर देता हूँ. ओके, एंड देन if you want to give feedback for the response true, like yeah, this is absolutely correct. Okay, and if you want to give the feedback for false answer, you can give. So this is optional. I have already told you before कि wherever this red exclamation mark is given, those fields are important and they need to be filled compulsorily. Otherwise, other fields are not required. And they are optional. So feedback for response false. Also, I can give uh, London is the capital. Okay, and then I can just click on save changes. अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसा स्टूडेंट को दिखेगा. सो यू कैन सी, is London the capital of United Kingdom? Select one. So if I select true and then click on submit and finish, so it says yay, this is absolutely correct. मैंने जो feedback response दिया था and correct answer is true. Similarly, if I want to start, let's start again and see. If I click on false and submit my answer, it gives London is the capital and then shows that this is the wrong answer and your mark will be 0 out of 1. Okay, so these are the two different types of questions. हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से हैं Moodle पे अवेलेबल, एंड दोज आर important. That's why I'm discussing. See, uh, when you are creating questions on Moodle, they are of different types. कभी आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए. सो वी विल सी, है ना. तो अभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द मीन टाइम, एंड देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड the other different categories of questions. So till then, thank you very much. Have a nice day.